Everyone. In Anthropology lecture series for paper 2, today we are going to discuss topic 8.1. So let's begin. See, in this particular topic, you have to study about the impact of these particular religion on the life of tribals. Of course, UPSC has also mentioned about the other religion, but broadly if you see, then you will find कि इन चार religion का tribals के ऊपर एक गहरा impact है and we'll study them in detail. Alright. And one more thing that you need to keep in your mind is कि ये जो topic है particularly like most of the topic although but इस topic के बारे में I would like to tell you that whenever you are reading the current affair it might happen that you come across some or the other article that you can correlate with this particular topic, so keep an eye on that articles and try to make a note out of it. Apart from that, whatever theoretical understanding, whatever anthropological understanding that you need to know regarding this particular topic will be catered through this particular lecture. So try to listen to the lecture carefully and you're good to go. So how we are going to cover this particular topic? So firstly, we'll just go briefly about the importance of religion in the life of tribals, and then we'll study about the impact of these religion one by one. All right, so let's begin. See, when you study tribal and when you study about any of the institutions related to tribals, you will find a certain impact of religion on all of those. If I can just take you back to paper one, हमने paper one में religion के बारे में पढ़ा था, right? We have seen like how religion has evolved over time. और उस एवोल्यूशन में हमने कुछ कंपोनेंट्स ऐसे पढ़े थे, फॉर एग्जांपल योर एनिमिज्म, एनिमैटिज्म, जो कि आज भी आपको ट्राइबल लाइफ में उसके कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं, विच मीन्स दोज religion which are kind of an redundant nowadays are still being followed by the tribals, which means to understand the tribal religion there is a lot more complexity. Of course जब हम religion की overall बात करते हैं, spiritualism की बात करते हैं, that is something different. When we talk about the tribal itself, tribal religion के बारे में हम बात करते हैं तो उसमें complexities और बढ़ जाती हैं, ठीक है? बिकॉज अगर आप देखो जो हम एक ब्रॉडर बड़े रिलीजन्स की बात करते हैं, हिंदुज़म की बात करते हैं, इस्लाम की बात करते हैं, तो दे आर सर्टेन टेनेंट्स दैट इज़ बीइंग फॉलोड. बट ट्राइबल के केस में वैसा नहीं होता है, एंड यू कैन से इन सिंपल टर्म्स कि आपको जो लाइक रिलीजन होते हैं, बड़े जो रिलीजन्स आप कह सकते हो सेट्स है, दे आर मोर ऑन एन होमोजेनस टर्म. बट अगर आप ट्राइबल की रिलीजन की बात करो तो दैट इज मोर हेट्रोजेनस इन टर्म्स ऑफ फंक्शनैलिटी. ऑल राइट, सो दैट इज अ बेसिक अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग और द डिफरेंशिएशन यू कुड से. देन जो हमने एनिमैटिज्म, एनिमिज्म, इन सब के बारे में पढ़ा था, तो यू नो लाइक हाउ दोज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन द ट्राइबल लाइफ, बिकॉज ट्राइबल के केस में नेचर ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. एंड मोर और लेस ये जितने भी आपके other forms of religion hai, they have certain correlations with the nature, and which is why since we say ki jal, zameen and jungle plays a very important role in the life of tribals, so eventually you could understand कि इस तरीके से जो religion है वो भी उनके जीवन का एक बहुत important part हो जाता है. It basically dictate their way of life, their way of thinking, and of course like other things as well. ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं ये दूसरे रिलीजन्स के लिए भी वैलिड है, बट इफ़ यू सी क्लोजली कि दूसरे रिलीजन में लाइफ डिक्टेट उतनी ज़्यादा नहीं होती है. ऑफ कोर्स पहले हुआ करती थी, बट आज के डेट में इवन इफ़ यू बिलोंग टू सर्टन रिलीजन, आप चाहो अपनी जो मर्जी वो कर सकते हो, राइट? देयर इज़ नो कंपल्शन कि आपको ये नहीं करना है या वो नहीं करना, आप फॉलो नहीं कर सकते. आज के डेट में रिलीजन इज़ मोर अबाउट द स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंसेस, राइट? बट ट्राइबल के बारे में अगर बात करूँ तो ट्राइबल्स कहीं ना कहीं अपने रिलीजन से इस कदर जुड़े होते हैं दैट दे काइंड ऑफ एन लिव दोज टेनेंट्स एज वेल. देन अगर हम बात करते हैं हिंदुइज्म की, लाइक व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर रिलीजन ऑन द ट्राइबल सोसाइटी.
और हिंदुज़म के बारे में अगर ब्रीफली हम बात करें तो इट्स लाइक ऑफ कोर्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिलीजन, एंड ये अगर आप पॉपुलेशन वाइज भी बात करो तो दिस इज अमंग्स द थर्ड लार्जेस्ट रिलीजन इन द वर्ल्ड, और अगर आप इंडिया में बात करो तो ऑफ कोर्स इट इज़ द फर्स्ट, राइट। सो हमारी कंट्री एक हिंदू डोमिनेटेड कंट्री है, हिंदुज़म यहाँ पे ज़्यादा फॉलो किया जाता है, बट वर्ल्ड वाइज भी इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट. That means it hold a lot more significance if it comes to impact. और ट्राइबल स्पेस का क्या असर होता है वो जानने के लिए वी हैव टू लुक क्लोजर कि क्या क्या कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से हिंदुइज्म इम्पैक्ट कर सकता है. सो वन इज़ योर कल्चरल एसिमिलेशन. कल्चरल एसिमिलेशन की जब आप बात करते हो, सो ट्राइबल्स वेर वंस आइसोलेटेड पीपल, राइट. तो ये आइसोलेटेड हुआ करते थे, दे डिड नॉट हैव एनी कॉन्टैक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड, सो दे वर लिविंग इन देयर ओन स्वीट वर्ल्ड. बट जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, या ड्यूरिंग द ब्रिटिश एरा ऑल्सो व्हेन दे रिक्वायर्ड वुड्स फॉर like the construction of the railways and all, they ventured into the forest, and of course tribals were known to live in those forests. और जैसे जैसे वहाँ पे आना जाना बढ़ने लगा लोगों का, the tribals started getting impacted by those people, okay. और इनके वजह से इनका cultural assimilation हुआ. And by now I'm assuming कि since you're watching the lecture for paper 2, you very well know what is cultural assimilation. I'm not going to repeat it over here, and if you do not know, you can just go to paper 1 और आप topic 2 के lectures देख सकते हो. There you will find a clear understanding of it, okay. 2.1. नाउ कल्चरल एसिमिलेशन इनका हो रखा है, तो अब उस पर कुछ एग्जाम्पल्स भी होंगे दैट यू नीड टू कीप इन माइंड. सो यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ द भील ट्राइब, ऑफ कोर्स और भी दूसरे हो सकते हैं जिसका आप एग्जाम्पल लिख सकते हो. यू कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ एनी ऑफ द ट्राइब्स, राइट. सो भील ट्राइब्स की आप बात करें तो भील ट्राइब्स आपको कहाँ देखने को मिलते ज़्यादातर? मोस्टली द सेंट्रल द वेस्टर्न रीजन, आपको गुजरात में मिल जाएंगे. देन इनका हिंदू रिलीजन के साथ कल्चरल एसिमिलेशन कैसे हुआ? तो अब कल्चरल एसिमिलेशन ऐसा नहीं है कि इट्स अ लाइक शॉर्ट टर्म प्रोसेस. इट टेक्स ईयर्स, इट टेक्स सेंचुरीज, मे बी सेंचुरीज तो चलो बहुत बड़ी बात होगी. इट टेक्स मैनी मैनी ईयर्स, राइट, टू गेट कल्चरली एसिमिलेटेड. अब ये कल्चरल एसिमिलेशन के बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं. इट कुड बी कि आपके कल्चरल एक्सचेंज हो रहे हो इन टर्म्स ऑफ फेस्टिवल्स, और हो सकता है कि ड्यू टू सम रीजन और द इंटर marriages amongst the tribal and the Hindus, they could carry forward some or the other things, right. Then there could be reasons कि चूँकि आप जो tribals थे उसके आसपास हिंदूज रह रहे होते थे, तो they could pick up like some of their practices as well that could be related to the worship, that could be related to the way of life, and so forth. So that you called cultural assimilation. And as I told you, it's not a short-term process, it takes time, right? Then your social mobility. अब ये social mobility क्या होती है? Social mobility sometimes when you say that the tribals, because they wanted them to be recognized to a certain extent, हो सकता है because as we know the tribals are discriminated to an extent. So to get out of that vicious cycle, it might happen that the tribal wants to move closer to the Hindu status. Again, for these two topics like cultural assimilation and social mobility, there are some references made by N.K. Bose in his essay on tribal absorption by Hinduism, right? So there you could find a detailed understanding of it, और हमने उसे tribal caste continuum के अंदर भी पढ़ा हुआ है. So there he explains how these tribals, because of the mobility factor or because of the assimilation, there could be like various other reasons, not just one. But yeah, as we are studying over here, कि social mobility भी एक कारण हो सकता है जिसके वजह से tribals could get converted or could get influenced by the Hindus. इसके एग्जाम्पल भी आप मेंशन कर सकते हो about the Gond tribe, okay. So I'm not going to explain you or read the case studies for you. You can very well go through that, but what I'm trying to tell you, whatever you are writing, just try to make sure that you use certain case studies with it, because that will give your answers much more leverage.
Among the other reasons are the missionary activities. अब missionary activities कैसे responsible थी? So basically, when the Christian missionaries were trying to convert the tribals to the Christianity, Hinduism, the people who are attached to this religion, they also wanted to push the Hindu religion ahead, and they wanted to stop those conversion by the Christian missionaries, and to do so they wanted them to remain get in the fold of Hinduism. So that is kind of a push and pull thing you could assume. And इसके एक example के अंदर आप लिख सकते हो about the Santhal tribes. So Santhal tribes, if you see, so that many of them have converted to Christianity, but some of those who are at a level are following the Hindu way of life. So that is like one of the prominent tribals, you could say, because Santhal, in terms of population also, इनकी population अच्छी खासी है. You can find them in Jharkhand, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, इन सभी जगहों में आपको मिल जाएंगे. थोड़े बहुत छत्तीसगढ़ में भी मिल सकते हैं. सो इनकी पॉपुलेशन अच्छी खासी है, एंड दे हैव इम्पैक्ट ऑफ बोथ द रिलीजन, ऑफ द क्रिश्चियनिटी एंड द हिंदुइज्म एज वेल. इकोनॉमिक इंसेंटिव्स. अब इकोनॉमिक इंसेंटिव्स भी एक कारण हो सकता है, एंड दिस इज वन ऑफ द पुल फैक्टर फॉर द ट्राइबल. वाई? बिकॉज ट्राइबल के केस में देर आर सर्टन things attached with them. They are not really seen good in trading or like businesses and other kind of a thing. So to make them fit for that particular occupation, they tries to move away from the tribal religion and keep closer to the Hinduism as a religion. Although it do not have any direct correlation with it, but yeah, to certain extent it also is one of the reasons. नाउ लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट, बिकॉज अभी तक जो हमने देखा, दीज आर ऑल रीजन्स कि क्या कारण हो सकते हैं बिकॉज ऑफ विच द ट्राइबल्स आर गेटिंग इन टू द हिंदुइज्म्स फोल्ड. अब इसके इम्पैक्ट क्या क्या हो सकते हैं? सो बेसिकली निर्मल कुमार बोस के जो पेपर थे, एज आई टोल्ड यू अर्लियर एज वेल, सो इट्स हिंदू मेथड ऑफ ट्राइबल एब्जॉर्प्शन. सो इन दिस पर्टिकुलर पेपर ही डिस्कस्ड अबाउट कि क्या क्या इम्पैक्ट्स आते हैं ट्राइबल्स के ऊपर ऑफ पर्टिकुलर रिलीजन, दैट इज हिंदुइज्म. सो इन्होंने सबसे पहले बात की थी अबाउट द आइडेंटिटी. आइडेंटिटी में कैसे चेंज आता है? बिकॉज एज वी नो कि ट्राइबल्स में या लाइक ऑन द अदर रिलीजन एज वेल, they will not find the varna structure as such, but in Hinduism there's a varna structure that is very predominant. So you can find that the tribal started following that hierarchical structure. So that is one of the major impact, you could say. And this was further studied by S.K. Srivastava, D.N. Majumdar. You can also quote them, and the tribes that they have studied, you can mention them as well. On the ritual aspects में क्या क्या changes आते हैं? So basically when you see the ritual aspect, तो ritual aspect में तो सबसे पहला change जो आपको देखने को मिलेगा वो है कि उनके certain जो observations होते हैं, उनके कुछ practices होते हैं, उसमें आपको बदलाव देखने को मिल सकता है. For example, यहाँ पे एक example दिया हुआ है wearing of the sacred thread. So sacred thread, as you know, जनेव जिसे हम कहते हैं, is being worn by the Brahmins, right? So it could be found कि जो tribals अपने आप को हिंदुइज्म दिखाना चाह रहे हैं, उनकी तरह बनना चाह रहे हैं, because you must have observed there's a fad in the youth these days that they try to wear the cross sign, okay, for some or the other reason. Some of them wear it for the fashion purpose, some of them develop a faith towards that religion, इसकी वजह से पहनते हैं, which is completely okay. So एक तरीके का उनको उनकी तरफ अपना इंक्लिनेशन दिखाने के लिए, क्रिश्चियनिटी एज अ रिलीजन की तरफ अपना इंक्लिनेशन दिखाने के लिए वो वैसी चीज़ें करते हैं. द सेम यू कैन अंडरस्टैंड इन टर्म्स ऑफ ट्राइबल फॉर द हिंदुइज्म. तो अब वो क्या कर सकते हैं? वो टीका लगा सकते हैं चंदन का, वो जनेव धारण कर सकते हैं. तो दीज आर लाइक सम ऑफ द एग्जाम्पल्स जो उनके रिचुअल एस्पेक्ट्स में आ सकता है, राइट? दे कुड स्टार्ट ऑब्जर्विंग द पूजा एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स. कल्चर पे क्या चेंजेस आ सकता है? अब कल्चर पे चेंज आने का, when we say culture, so culture is something, again, not something that you develop at a time. It is something that you have gained with time, right? Or something that you have learned from your forefathers, like that. So tribals के केस में उनका एक अपना certain culture होता है, उनका अपना एक खाने का तरीका होता है, एक पहनने का तरीका होता है, हर चीज़ों को करने का उनका एक अपना तरीका होता है. So when they
come in the fold of Hinduism, तो उनके उन कल्चरल एस्पेक्ट्स में चेंज आता है. इट कुड बी द चेंज इन देयर मैरिज प्रॉस्पेक्ट्स. वो जिस तरह से अपनी शादियाँ करते थे हो सकता है उसमें बदलाव आ जाए. They could change in the way of eating, they could change in the way of the dressing styles and all. So there could be a number of changes that can come in their culture. Okay, there's no one thing that could change. There could be many, और हो सकता है कि बहुत कम चीज़ें change हो, but there is a possibility कि ऐसे कुछ changes आएंगे. And then again you can mention about the S.C. Roy studies of the Orao, जहाँ पे उन्होंने ये बताया था कि कैसे उन्होंने जो tribals थे after they came in touch with the Hindus, they have started like worshipping the Hindu gods and goddesses. Because as we know tribals के केस में they mostly worship the nature, right? But यहाँ जो ओराव थे उन्होंने अपना वर्कशिप शिव पार्वती को करना शुरू कर दिया था, एंड अर्लियर दे वर वर्कशिपिंग द सन. नाउ लेट्स सी ट्राइबल विमेन पर क्या चेंजेस आते हैं, में क्या चेंजेस आते हैं आफ्टर दिस इम्पैक्ट ऑफ रिलीजन. सो ट्राइबल विमेन के केस में अगर आप देखो, सो when you compare the tribal women and the women from the Hindu religion, so you will find certain contrast, and one of the prominent one is in terms of freedom. So when I say freedom, so in the tribal society, that is more of an egalitarian kind of a thing. वहाँ पे equality is more prominent compared to the Hinduism. Of course, in Hinduism also there are like certain changes in the recent past and since past many years as well. But still, अगर आप उसको ट्राइबल से कंपेयर करो तो देयर द वुमेन आर एट अ मोर हायर पेडेस्टल यू कुड से. और बहुत सारी ऐसी सोशल एविल्स है दैट इज नॉट देयर इन द ट्राइबल सोसाइटी एंड द ट्राइबल वुमेन एज सच, बट दैट एग्जिस्ट इन द हिंदू सोसाइटी. सो इवेंचुअली यू कैन अंडरस्टैंड कि अगर ट्राइबल हिंदू रिलीजन की तरफ मूव कर रहा है, and when I say tribal, so it consists of both men and women, and जो women हैं उनका कहीं ना कहीं life will get impacted by the Hindu religion. And as we just discussed कि Hindu religion के कुछ practices ऐसी हैं which you could say are not good, so that will have a negative impact over here, right? और वो negative impacts क्या क्या हो सकते हैं? One is your child marriages, another is your increasing restrictions, then comes your dowry system, because dowry system as we say is not prevalent in the tribal societies, right? वहाँ पे तो आपको bride price का concept देखने को मिलता है, but in Hinduism we have a dowry concept. So ये भी एक social level है which is being passed down to the tribal women's life. So you could say it's like more on a negative connotation. Then youth dormitories पे क्या impact आता है, and why we have taken this particular thing separately, because youth dormitory tribal culture का एक बहुत important part था. If you want you can just like club it with the culture part, but as I said कि इसको अलग से इसलिए लिया है because you have certain examples to write it down over here that will look good, because हमने youth dormitory के बारे में पहले भी पढ़ा हुआ, and we have seen like how with time the practice of having youth dormitories in the tribal society is on a downtrend, right? और उसके भी अलग अलग रीजंस भी हमने देखे थे, सो दैट यू कुड यूज हियर एज वेल. ओके, सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग द इंटायर पेपर 2 कि आप बहुत सारी चीज़ें इवन फ्रॉम पेपर 1 यू कैन ऑल्सो यूज. ओके, एंड दैट इज़ वॉट लाइक मोर रिवॉर्डिंग व्हेन यू से यूपीएससी के अंदर. Now let's study the impact of Buddhism on the tribal societies. So when you talk about Buddhism, so Buddhism के बारे में हमने already अपने ancient history में पढ़ा हुआ है, हमने art and culture में detail में पढ़ा हुआ है, like how it was propagated, how Gautam Buddha went through all his journey, and what are the tenets of it, right? But here you need not to go into that direction. You just need to know the basics of Buddhism first, and when you know the basics, right? So now you need to understand that in tribal societies, you will find a good number of tribals being are following the Buddhist religion. And when you say they are following Buddhist religion, so unlike the Hindu religion that we just studied, when we have seen कि उनका cultural assimilation हो जाता है and they started following the Hindu practices, but ट्राइबल्स के बुद्धिस्ट फॉलो करने में कई बार ऐसा भी होता है दैट दे आर लाइक मिक्स ऑफ बोथ. ओके,
because that is the beauty of Buddhist religion. It always say कि you need not to discard your own religion and then follow Buddhism. You can do both of them parallelly as well, right? But you just need to follow like certain principles of it. So when we say the tribal values or the tribal principles, तो tribals के केस में भी आप देखोगे they are like very much devoted towards the nature. बुद्धिज़्म भी हमें यही सिखाता है that आप नेचर से प्यार करो, you do like good to the nature and all of those things, right? So that is in alignment with the tribal values. Then you have the practices, various practices where you see the Buddhist have certain rituals that they follow, and the tribal have certain rituals to follow. So in that case, you see that there is a kind of a coexistence of the traditional, tribal and the Buddhist practices. As we just discussed कि Buddhism आपको ऐसा एक solid line बनाने को नहीं बोल रहा है, you could be flexible at a time. Then the continuation of traditional rituals. Of course, continuation of traditional ritual is somewhat like attached to this only. So here you could see कि जो tribal practices है, tribals जिन्होंने भी adopt किया हुआ है, amongst them is like खोवास, जिसको हैमंडॉफ ने स्टडी किया था. He found out that these tribals are actively participating in their own activity, in their own traditional like rituals, whatever they have, and at the same time they are also following the Buddhist rituals and the cultures. So this is a very good example of how this particular religion impacted the tribals, but at the same point of time it did not absorb their entire religion, but presented a good example of coexistence. And for that you could actually quote some case studies which I have mentioned for you, so that you can note it down in your notebook. This is the another case study. Make sure like whenever you're writing about the impact, you should mention of this particular case studies. Now talking about the impact of Christianity. सी अगर आप क्रिश्चियनिटी की बात करो, सो क्रिश्चियनिटी में अगर आप नंबर जानना चाहो, सो ऑलमोस्ट लाइक 9.9% ऑफ द ट्राइबल्स आर क्रिश्चियन, एंड मोस्टली these are dominated towards the northeastern part of our country. वहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा क्रिश्चियनिटी में कन्वर्टेड या क्रिश्चियन रिलीजन को फॉलो करने वाले ट्राइबल्स मिलेंगे. There could be some reasons for that. We will discuss that in the upcoming slides. Also, you could find a good number of population in the southern part as well. But of course, the northeast has a higher hand over there. So let's see the impact. Of course, I'll tell you in brief that what were the reasons for that. So basic reason to yahi the that your Christian missionaries, when they started pouring in, so they have started observing the discrimination being faced by the tribals, the exploitation that they are going through. So to cater all of those, and of course they have their own beliefs regarding that. So based upon all of those things, they started converting these tribals to the Christian religion. And while doing so, they have opened so many schools, they have educated the tribals. If you could see that amongst the northeastern part of our country, the tribals are the predominant one, and amongst those you will find the literacy rates is very very high compared to the rest of the India, like rest of the Indian tribals. So that is very high. So one of the major reasons for that is of course the Christian missionaries, that they have done good. They have opened hospitals, they have opened schools that eventually helped in raising the social overall social well-being. But eventually they have their own agendas as well, but will not go into there. Okay, so what were the impact? So social impact था. अब social impact को भी you could say in like two ways. One is that there was a good education system, the healthcare system improved, because earlier the tribals were mostly focusing towards the magic, the witchcraft, ये सारी चीज़ें वो करके करते थे, and that was like counterproductive, of course. So while coming in contact with the Christian religion, all of these social evil
were eventually eradicated. Okay, if not fully eradicated, ये बहुत कम हो गए. And the formal system, जो education का system होता है, school होते हैं, colleges होते हैं, hospitals होते हैं, they have started taking a way forward. बट इसका अगर आपको अदर साइड भी लिखना है कि उनकी सोशल जो इम्पैक्ट था वो नेगेटिव कैसे हुआ, सो बेसिकली दे हैव स्टार्टेड लूजिंग देयर ओन आइडेंटिटी बिकॉज दैट was not tribals as they are. That is the influence of the Christian missionaries, right? So that you could definitely mention. Now the religion. अब हम रिलीजन की ही बात कर रहे हैं तो रिलीजन में तो ऑफ कोर्स चेंज आया ही आया होगा. सो रिलीजन में चेंज एक बहुत बड़ा ये आया कि जो बिलीफ सिस्टम थे वो भी ट्राइबल्स के चेंज हो गए. सो व्हेन वी से बिलीफ सिस्टम चेंज हो गए तो लेट्स अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. सो ट्राइबल फेस्टिवल जो सरहूल फेस्टिवल मनाया जाता है, इट्स वेरी फेमस फेस्टिवल अमंग्स द मुंडाज. इफ यू go in Jharkhand, you will know more about this particular festival. So सरहूल फेस्टिवल मनाया जाता है. तो उस फेस्टिवल का जो इंटरप्रिटेशन है दैट कंप्लीटली चेंज्ड फॉर दोज ट्राइबल हु हैव कन्वर्टेड देमसेल्फ. फॉर देम द सरहूल इज सेलिब्रेटेड because there was a fight between Alexander and the king Porus, and to commemorate that particular fight, this particular festival is celebrated. So what we are trying to make up a case over here is कि tribals का belief system भी change हुआ after coming in touch with the Christianity. And this was again studied by B.C. Sahai, that you could mention, that he studied the Orao of the Chainpur region in the Ranchi district. Ranchi district is in Jharkhand. तो वहाँ पे उन्होंने study किया. And when we say Bihar, so ये बिहार जब ये इन्होंने study किया था, which was in 1963, then Jharkhand was not a separate state. Okay, so that was part of Bihar, which is why it is mentioned Bihar over here, but do not get confused. तो वहाँ पे इन्होंने स्टडी करके ये पाया कि जो उनका अपना एक ट्रेडिशनल रिलीजन सिस्टम था, विच इज सारना. और आप देखोगे इन द रीसेंट पास देयर इज अ न्यूज रिलेटेड टू सारना एज वेल, बिकॉज इसको कोडिफाई करने की बात की जा रहे हैं. सो बट दैट रिलीजन एग्जिस्ट ओवर देयर. अभी कोडिफिकेशन की बात हो रही है, उसको एक लीगल स्टेटस देने की बात हो रही है, बट इट इज़ देयर. तो इनका ये मानना था कि जो इन्होंने ट्राइबल्स को स्टडी किया कि यहाँ पे उन्होंने अपने जो ट्रेडिशनल बिलीफ सिस्टम थे विच इज़ द सारना रिलीजन, उनको छोड़ के पूरी तरह क्रिश्चियनिटी फेथ को अपना लिया. एंड अपने सारे जो फेस्टिवल्स थे उसके इंटरप्रिटेशन भी उन्होंने इसी अकॉर्डिंग चेंज कर लिए. नाउ लेट्स सी द इम्पैक्ट ऑफ इस्लाम ऑन द ट्राइबल सोसाइटी. सो व्हेन वी से इंडिया, सो इंडिया में आपके हिंदुज़म के बाद इस्लाम इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट रिलीजन, राइट? बट इवन दो जितना इम्पैक्ट आप क्रिश्चियनिटी का या जितना इम्पैक्ट आप टू एन एक्सटेंट बुद्धिज़्म का देखोगे, इन द रेशियो ऑफ इट्स like total population, the impact of Islam is lesser on the tribe. Why this is so? Because हमने बाकी के cases में देखा there was certain patronage with respect to the missionaries, with respect to the Hindu leaders, but here in this case there was no such official patronage, जिसकी वजह से आपको impact थोड़ा कम देखने को मिलता है. But still there is significant impact that we will see. And who was the person kind of responsible? Then you could say it was the Sufi saint Ubaidullah. Okay, he was the one who kind of spread Islam amongst the tribes of India. और कुछ important tribes जिसके नाम आपको याद रखने हैं, which is the Amenadivis, Koyas, Malmis and the Malcheris. So these are like few of the tribes. Of course Bhakarwals भी है to a certain extent, you could mention that as well. Okay, सो ये जो सारे ट्राइब्स हैं दीज यू विल फाइंड इन लक्षद्वीप. बकरवाल आपको गुज्जर बकरवाल ये हिमालयन रीजन में आपको देखने को मिलेंगे. देन यू हैव भील्स एज वेल. कुछ सेक्शन ऑफ देम आर kind of an influenced by Islam that you could mention. So when you say like what are the impact, so एक impact ये था कि when you talk about the tribes, तो tribes में हमने ये भी पढ़ा हुआ है that tribes have certain matrilineal culture as well. But because of the impact of Islam, you will see like many of these tribes, which you could see on your screen, were following to a certain extent the matrilineal culture. But after coming in contact with Islam, their matrilineal culture basically got impacted, और वो पूरी तरह से almost ख़त्म ही हो गया आप कह सकते हो. Then
दो ट्राइबल्स के फेस्टिवल्स थे अपना, बिकॉज दिस यू विल फाइंड लाइक एवरीवेयर, वेदर इट इज़ हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज्म, कि एक बार दे कम इन कॉन्टैक्ट, देन the relevance of their own festival started decreasing and the relevance of the festival of the religion which they have adapted eventually increased. तो यहाँ पे भी उनके साथ यही हुआ. There are like certain changes in the food habit but not very drastically. Then पहनावे में काफ़ी change आया, because Islam is known for certain like etiquettes in terms of dressing and all. तो वो भी changes आपको देखने को मिले. And एक चीज़ जो common थी among both this religion was the concept of universal brotherhood, equal treatment. तो ये कहीं ना कहीं helped in like merging these two particular you could say set of people or set of beliefs. So that is overall about the impact of major religion as we have studied, right? But there is like another important topic which is matrilineal Islam. So why I'm telling you this particular topic, because this might happen that UPSC can ask you a 10 marker question where they are asking you about elaborating upon the matrilineal Islam. So here you could definitely mention about the study being done by Leela Dubey and A.R. Kutty. They have done their research, their study in Lakshadweep, where they have like compared the impact of Islam on the particular tribe living over there and to particular on the matrilineal. So that is a very good case study that you should definitely go and read. I have also discussed that while discussing about Leela Dubey. It is there in the note as well. Of course, there are some global examples. If you are really interested, you can read about them as well. So this is more of an extended reading for you. This is not compulsorily UPSC wanting you to read, but as we know that UPSC will want you to do something extra, and this is that particular extra, or you could say the value added thing that you should definitely do. Okay, and with this we have covered this topic 8.1. Thank you so much.